अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से होगा कि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन के साथ में पहुंच जाएंगी। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन, जिसके अंदर हम असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राम भी पढ़ेंगे, रिटार्डेशन फैक्टर भी पढ़ेंगे एंड यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ेंगे। Paper chromatography, it is a technique of partition chromatography. Here the stationary phase is a liquid, say H2O, absorbed on paper. The absorbed water behaves as an immiscible liquid toward the mobile phase which faces over the paper. Third है the mobile phase is usually an organic liquid. ये MCQs भी आ सकते हैं. There are three main ways to carrying out paper chromatography, namely descending, ascending, radical and circular. Ascending paper chromatography है. In this technique, the solvent is a pool at the bottom of a vessel in which the paper is supposed and the solvent travel upward by capillary action. A solvent mixture, specially composed in accordance with the sample to be separated, is poured into the chromatographic tank. Cover the tank to homogeneous in inner atmosphere. Take about 20 cm strips of Whitman's and chromatographic paper number 1 and draw on in a thin pencil line about 2.5 cm from one end. Support a point on the pencil line with the sample mixture solution to facilitate identification of the component of the mixture. Support of the non-compound may also be placed alongside. When the spot has dried, suspend the paper with clips so that the impregnated and dips into the solvent mixture to a depth of 5-6 mm. Cover the tank as the solvent passes the support to the solution being to be moved upward. The rate at which they move depend on their distribution coefficient. When the solvent front has risen to about 3/4 of the length of paper, remove the strips, make the solvent front with a pencil and allow the strip to dry. Chromatogram, the finished dried product with the colors band of various components of a mixture obtained is chromatographic experiment is called chromatogram. This different component of the mixture is colored can wisely be identified. Development of chromatogram. If the component of a mixture are colorless, then the chromatogram has to be developed by chemical method, physical method, by using locating agents such as H2S, 9-hydrin and rubinic acid. Physical method, by heating or by throwing ultraviolet radiation we can identify the spot. आगे है हमारे पास retardation factor. It is the mathematical ratio which is obtained by dividing distance traveled by a component from original spot and the distance traveled by the solvent from the original spot. Retardation factor is equal to distance traveled by a component from the original spot, distance traveled by the solvent from the original spot. Each component of a mixture has specific value. The RF value has no unit. The RF value of a component is related to the distribution of coefficient. यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी क्या है, कितने हैं टोटल? 4 हैं, 4 को डिस्कस कर लेते हैं. The techniques of the chromatography are very useful in organic synthesis for separation, isolation and purification of product. Second है, they are equally important in qualitative and quantitative analysis. These techniques is used for the determination of the purify of a substance. फोर्थ है हमारे पास, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर फोरेंसिक एनालिसिस. तो गाइज़, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट. एक बार बता देती हूँ आपको हमने क्या किया. हमने किया पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसके अंदर हमने सेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस किया, दैन क्रोमेटोग्राम को डिस्कस किया, फिर रिटार्डेशन फैक्टर को भी, इसकी डेफिनेशन और उसके साथ हमने इसके जो पॉइंट थे, फार्मूला था, वो भी कर लिया और उसके बाद यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी भी कर लिया. इसके साथ हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट. अब आपने क्या करना है, मुझे देनी है इजाज़त. इजाज़त लेने से पहले मेरी आप तो गुजारिश है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है,
वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से होगा कि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ होंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ में पहुंचेंगे। तब तक के लिए स्टे लीजेंडरी।